welcome to my channel Chartered Beans and I am Jyoti Chauhan from Chartered Beans। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। लेकिन चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका रिवीजन करना, क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं, एक एवरेज बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन टॉपर्स में ये खासियत होती है कि वो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करते हैं। हम जितने अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे उतने अच्छे ही हमारे मार्क्स आएंगे। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका टेस्ट लेने के लिए कि हमें कितना चैप्टर समझ में आया है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करे हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, ओनली 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक का है, बट वो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, प्लस वो क्वेश्चन बहुत अच्छी ट्रिक्स के हैं। तो यू हैव टू ट्राई इट एंड प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है। So guys, first question is that Sita and Geeta were partners in a firm. On 1st April 2011, they admitted Neha as a partner for 1/3 share in the profit of the firm. She is differently abled. The new partnership deed provides for the following. First, A. 5% of trading profit will be donated to Red Cross Society. B. 10% of trading profit will be donated to the Prime Minister Relief Fund. C. Products will be sold to people below poverty line at a discount of 15% on maximum retail price. New retail shops will be opened in the backward area of the country. New recruitment of salespersons will be reserved for the girls belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. The trading profit of the firm for the year ended 31st March 2012 was 12 lakh. Identify any 4 values that were kept in the mind by Sita, Geeta, Neha while preparing new partnership deed. Also prepare P&L appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2012. And second question of past adjustment is that X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They employed Z as their manager, to whom they paid a salary of 7,500 per month. Z had deposited 2 lakh rupees on which interest was payable at the rate 9% per annum. At the end of the accounting year 31st March 2016 यानी कि 2015-16, after division of year's profit, it was decided that Z should be treated as a partner with effect from 1st April 2012 with 1/6 share of profits. His deposit being considered as capital carrying interest at the rate 6% per annum like capitals of other partners. The firm profit and losses after allow interest on capitals were 2012 and 13 का प्रॉफिट है 5,90,000, 13-14 का प्रॉफिट है 6,26,000 एंड 14-15 का लॉस है 40,000 एंड 15-16 का फिर से प्रॉफिट है 7,80,000. So you have to pass journal entries to give effect to the above and also prepare P&L appropriation account. And note is interest on capital is to be allowed as a charge. So guys, you done? And third question is started. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2015, giving 1/4 share of profits. C, while a manager, was in receipt of a salary of
27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be personally borne by A out of his share of profits for the year ended 31st March 2016 amounted to be rupees 2,25,000. You are required to prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2016. Ankur, Bhavna and Disha are partners in a firm. On 1st April 2015, their balances of their capital accounts stood at rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profits in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum and salary to Bhavna at the rate rupees 50,000 per annum and a commission of 3,000 per month to Disha as per the provision of partnership deed. Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than rupees 170,000 per annum. Disha's share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at not less than 1,50,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Ankur. The profit of the firm for the year ended 31st March 2016 amounted to rupees 9,50,000. Prepare P&L appropriation account for the year 31st March 2016. सो गाइज स्टार्ट कर दीजिए कॉपी पेन लेकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि बोर्ड में हमें किस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चन बोर्ड में नया होगा उसको भी आप फेस करने के लायक जब ही बन सकते हैं जब आप घर बैठकर उन क्वेश्चंस को करें जो बोर्ड में आए हुए हैं। सो ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत अच्छी ट्रिक्स के क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं कहती हूँ 3 में से 4 में से अगर 3 क्वेश्चन भी हो जाता है तो इट्स गुड, अगर 1 भी नहीं होता है इट्स गुड, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा। उन बच्चों में से नहीं है कि जो देखेंगे और ट्राई भी नहीं करेंगे। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप चीजें समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है बोर्ड में। तो आपको ट्राई करना चाहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ऐसी क्वेश्चन सीरीज आगे मिलती रहेंगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।